Hello friends, I am Tushar Tiwari and today we are discussed the very important topic of software engineering, that is RUP or RUP model. So first of all, the full form of RUP is Rational United Process. So in this video we are discuss about what is RUP, RUP overview and the phases of RUP and its discipline. So, what is Rational United Process? The Rational United Process or RUP is software engineering process developed by Rational Software IBM. It provides a disciplined approach to assigning tasks and responsibilities within a development organization. सो RUP वर्क्स को असाइन करने के लिए एक डिसिप्लिन व्यू प्रोवाइड करता है। बेसिकली यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस मॉडल है, पर यह इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है? यह इम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के ऊपर। अभी हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जब आपको डेवलपमेंट मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पर RUP मतलब रैशनल यूनाइटेड प्रोसेस मॉडल का यूज़ कर सकते हो। Its goal is to ensure the production of high quality software that meets the needs of its end user within a predictable schedule and budget. It is guide for how to effectively use the unified modeling language. RUP यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में भी गाइड करता है। The rational unified process divides one development cycle in four consecutive phases. The software lifecycle is broken into cycles, each cycle working on a new generation of the product. In this model, the project go through from four phases. The first one is inception phase, second one is elaboration phase, third is construction phase and fourth is transition phase. सो RUP मॉडल में जो प्रोजेक्ट है वो जनरली 4 फेजेस से गो थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज़ इंसेप्शन, सेकंड एलोब्रेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन फेजेस। So the first phase is inception phase. During the inception phase, you establish the business case for the system and delimit the project scope. To accomplish this, you must identify all external entity with which the system will interact and define the nature of this interaction at a high level. This involves identifying all use cases. The milestones are stakeholder concurrence on scope definition and cost scheduling estimates, credibility of the cost estimate, priority, risk and डेवलपमेंट प्रोसेस। सो इंसेप्शन फेज़ में प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसका शेड्यूलिंग, उसकी प्रायोरिटीज़, रिस्क, हर चीज़ इसमें फिक्स की जाती है और चेक की जाती है। So second phase is elaboration phase. Elaboration is the second of the four phases in the RUP approach. The goal of elaboration phase is defined and baseline the architecture of the system in order to provide a stable basis for the bulk of the design and implementation effort in construction phase. The architecture involved out of consideration of the most significant requirement. In this phase, we check is vision is stable, is architecture is stable, does executable show true risk management. बेसिकली इस फेज़ में हम चेक करते हैं और प्रोजेक्ट को एलेबरेट करते हैं और चेक करते हैं उसका विज़न स्टेबल है या नहीं, आर्किटेक्चर कैसा है और उसका रिस्क मैनेजमेंट कितना है। नेक्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन फेज़. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज़, all remaining component and application features are developed and integrated into the product, and all features are thoroughly tested. सो एलोब्रेशन के बाद नेक्स्ट फेज़ है कंस्ट्रक्शन फेज़. इस फेज़ में ऑल रिमेनिंग कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस फीचर्स को डेवलप करते हैं और इस फेज़ में प्रोजेक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, प्रोग्रामिंग वगैरह, उसकी प्रोजेक्ट की टेस्टिंग, ये सारा इसी फेज़ में इंक्लूडेड रहता है.
The construction phase ends with an important project milestone, which is used to determine whether the project is ready to be deployed into a beta test environment by answering. तीनों phases के बाद लास्ट फेज है ट्रांजिशन फेज. The transition phase is entered when a baseline is mature enough to be deployed in the end user domain. Once the project has been given to the end user, issue usually arise that require you to develop new realize, correct some problem or finish the feature that were postponed. इस फेज़ में जो प्रोजेक्ट रहता है वो यूज़र को दे दिया जाता है और यूज़र उसकी टेस्टिंग करता है. इन दिस लास्ट फेज़ जो प्रोजेक्ट रहता है वो यूज़र को दे दिया जाता है और यूज़र उसका फीडबैक देता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसे करेक्ट किया जाता है. सो इटरेशंस. Each phase in the rational unified process can be further broken down into iterations. An iteration is a complete development loop resulting in a release of an executable product, a subset of the final product under development, which goes incremental from iteration to iteration to become the final system. सो इटरेशंस का मतलब है जो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में जो सारे फेजेस रहते हैं उनको फर्दर ब्रोक किया जाता है इटरेशंस में. इटरेशन जो रहता है वो एक कम्प्लीटली लूप टाइप रहता है. सो स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ RUP. स्टैटिक डायमेंशन ऑफ RUP कंसिस्ट ऑफ सम रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड artifacts and workflows. Workflow is a way to describe meaningful sequence of activities that produce some valuable result and to show interaction between roles. Roles in RUP are assigned to workers and preparing an artifact assigned to roles. Activities show how a role will do an assigned. So in this video we was discuss about rational unified process और हमने इसमें इसके फेजेस डिस्कस करे थे विच आर इंसेप्शन फेज़, एलेबोरेट फेज़, कंस्ट्रक्शन फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़. और इन सब को डिटेल में डिस्कस किया था और लास्ट में इटरेशंस के बारे में पढ़ा था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.